Hello, do everyone can listen me or do I am audible? Yes, sir, you are audible. Okay, sir. Thank you for this opportunity. This is a demo class for an AutoCAD, and this is for only for beginner. Okay, because I'm starting from basic. So before that, I want to know that the student which is present from which particular region are they are from. आप कहाँ से जुड़े हुए हैं ये पहले मुझे बताएं. मैं स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ. प्लीज बता सकते हैं. हेलो. Yes, sir. हाँ. सो आई कैन सी दैट दे आर 9 पार्टिसिपेंट. यहाँ पर 9 बच्चे हैं मेरे से जुड़े हुए हैं. तो कहाँ से लोग जुड़े हैं? शुभम पाल, हिमांशु, जग और क्या, और मिस्टर और साई तेजू. ओके. कोई बात नहीं. मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ. और इसके इसके पहले मैं आपके अपना एक स्क्रीन क्या करता हूँ, शेयर करता हूँ. ठीक है, 1 मिनट. Okay, can everybody here can see this? This is my page, my screen page. Is it visible? Yes, sir. Okay. Okay, just wait a minute. Hmm. So welcome you everybody. So welcome you everyone present here. My name, first of all, my name is Subham Gupta. I'm an civil engineer, and I have more than 8 year experience in this field, in designing field, site engineer, and many other projects in this last 8 year. Okay, so I welcome you everyone. और इसके पहले मैं जानना चाहता हूँ कि डू आई एम सुटेबल इन हिंदी और इंग्लिश. मैं किस में ज़्यादा सही रहूँगा, इंग्लिश या हिंदी में? मैं अपने स्टूडेंट से जानना चाहता हूँ. Should I speak in English? Should I speak in Hindi? Or should I merge those two languages? Okay, English. Okay, so according to most of the students, they want English, Hindi and English both. And from which regions all the students are present here? I can see one student from Sri Lanka. Okay, one from Himachal Pradesh. Okay, very good. So few students are joining. So I am just taking few 1 or 2 minutes more so that more student can join, and after that we will start this session. Okay, मैं कुछ समय और वेट करता हूँ, बस 1-2 मिनट के लिए, कि और पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऐड हो सके और उन्हें चाहे हो सके ज़्यादा उन्हें मिस ना हो. ओके, तो ये सेशन मिस उन्हें ना हो, इसलिए मैं कुछ समय और देता हूँ. आई एम गिविंग फ्यू मोर time, just 1 or 2 minutes, so that more participants can join this session and they can learn from starting, so that they don't miss from starting point. Okay, and at the last, and if they miss the starting point, then what happens? You have many doubts. Okay, so before going through that, I just waiting for 1 or 2 minutes. And before that, I also request all my students take one page and pen in front of you in your table, so that you must note, okay, what I'm saying and what I'm going to discuss here. आप सभी कोई अपने साथ एक पेन और पेपर साथ में रखें, जिससे आपको नोट करने में आसानी हो. ओके, और आप क्या करें, स्किप ना कर सकें कोई पॉइंट को. ओके. Okay, one more student has joined from Jharkhand. So I think I'm covering most of in our nation part. Huh?
and international also. Wow. Okay, 13 students have been added right now. So I'm just asking from a student, should I start this session or should I wait for a few 1 more minute? You can continue, sir. Okay, sir. So welcome you everyone present here. Now I'm going to start this session. Today in this session, I'm going to start AutoCAD, the basic part for AutoCAD. Okay, wait, I think there's some error in my screen. Okay, so I'm going to discuss few basic points in this AutoCAD class, demo class. And again, I am just introducing myself. My name is Surya Gupta. I am a civil engineer and having more than 8 years of experience. And today I'm going to conduct this demo class for the students who having basic knowledge in AutoCAD or they doesn't have any knowledge in AutoCAD. But after this session, the student, if they stay with me till the last, okay, जब तक अगर आप इस सेशन में हैं तब तक अगर आप लास्ट तक रहिएगा तो आप एक भी पॉइंट क्या है मिस नहीं कीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही ये गेन रहेगा तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ टू ऑल माय स्टूडेंट जस्ट स्टे till the last, okay, till the end. Don't go from this class out from this class in middle of the session. ओके, आधा अधूरा नॉलेज क्या होता है, बहुत हानिकारक होता है, तो इसलिए मैं आप सारे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लास्ट सेशन के लास्ट तक बने रहें. ओके, नाउ व्हाट इज ऑटोकैड. हम सभी जानते हैं कि ऑटोकैड क्या है. ऑटोकैड इज जस्ट अ सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, एंड in civil engineer, the students or the engineer, they use AutoCAD for the basic designing purpose and for 2D and 3D drawing designing purpose. Okay, तो हम सब AutoCAD क्यों यूज करते हैं. हम सब AutoCAD मोस्टली जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो डिजाइनिंग, जैसे आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं, एलिवेशन हुआ, ये प्लान वर्क हुआ, सो दिस इज योर एलिवेशन पार्ट, दिस इज अ प्लान पार्ट. सो AutoCAD इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द सेक्टर. हम सभी जगह सेक्टर में क्या, तो मैक्सिमम सेक्टर में हम AutoCAD यूज करते हैं. लेकिन आज के सेशन में हम मोस्टली सिविल के पार्ट में हम जानेंगे कि कैसे हम AutoCAD को अपने इस प्रोफेशनल लाइफ में यूज करें. ठीक है. नाउ what are the points we are going to discuss today in this session. हम लोग क्या आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में. आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे ऑटोकैड के बारे में और कैड ऑटोकैड हमारे प्रेजेंट लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है, हाउ द कैड इज ऑटोकैड इज इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर प्रेजेंट डे लाइफ, द स्कोप ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के क्या क्या स्कोप्स हैं. ओके, एंड हम लोग ऑटोकैड की बेसिक जो हमें फ्रंट स्क्रीन है वो हम लोग देखेंगे और ऑटोकैड से कुछ कमांड्स. You will see the AutoCAD tools command, and there are few keyword in your keyboard, some few important key that we are going to discuss, and I will also make you understand while doing practically, okay, how to draw, and I will make sure you should practice the same thing as I am doing. I will do in the end of this session. Okay, मैं कुछ आपको ड्राइंग करके दिखाऊंगा AutoCAD में, और जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि हम लोग कैसे जुड़े. ठीक है, नॉट कैसे जुड़े, तो कैसे हम AutoCAD के एप्लीकेशन को यूज करें. ओके, फॉर द बिगनर. नाउ व्हाट इज AutoCAD. AutoCAD है क्या. ओके, सो AutoCAD is a name, okay, which is made from two word, that is auto and one is CAD. AutoCAD two word से बना हुआ है, एक auto और एक क्या है CAD. Okay, so what is auto, how auto has, ये auto का नाम आया कहाँ से. Okay, so AutoCAD is nothing, it is the name of company. Okay, can you see this one, Autodesk. Okay, so this it is a company name Autodesk, and the first four letter from this part. Okay, auto from the company name, and the last
is added here, CAD, CAD. That means computer aided design. So AutoCAD is just a merge. It is a merge of two words, that is auto and CAD. CAD stands for computer aided design. So CAD क्या है? इसका full form क्या है? Computer aided design. But in some places we can also see CADD. Okay, हम लोग कहीं कहीं कुछ कहीं पर हम देखेंगे क्या कि हम लोग CADD यूज करते हैं. तो D क्या क्या है? एक्स्ट्रा D यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो एक्स्ट्रा डी अगर कभी कभी आपको दिखेगा तो आप इससे क्या रिप्रेजेंट करोगे? इस समय उस कैट का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इट विल बी CADD, दैट मीन और कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग. Okay, please note this one. When you have CADD, then in the last it will be a drafting. Okay, this is a so these are the main point. Before starting AutoCAD, you must know this. आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, जो मैं इस पॉइंट यहाँ पर लिखा हूँ. ओके, सो AutoCAD इज 2D एंड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर. AutoCAD क्या है? इट्स अ डिजाइनिंग. AutoCAD हम लोग 2D 3D हम लोग क्या करते हैं? मॉडलिंग डिजाइन हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं. और हमारे जो बेसिक्स, हमारे जो कोर्स, मतलब नॉट कोर्स, इन आवर जॉब पर्पस वी यूज दिस. ओके, तो 2D ड्राफ्टिंग और 3D मॉडलिंग. And who developed this? The software developed किसने किया? Okay, the name of that person is John Walker. Excuse me, sir. Yes, sir. So your slides are not changing. It's only on that welcome slide. Okay, it is a welcome slide. Okay, just wait a minute. Now it is visible. Yeah, it's visible. Just try to change it, sir. It's in the welcome page only. Do it is changing? No, sir, it's not changing. Okay, just wait a minute. I think some. So you can try resharing again. Okay, sir, please. Okay, I'm sharing. Please sharing. Do it visible? ये visible हो रही? Yeah, now it's visible. Yeah, it's Now it is now slide is changing. yes, sir. It's changing. Okay, okay, okay. Thank you for this information. Okay. Hmm. So I'm just starting again. Okay. So what is AutoCAD? AutoCAD nothing but it is a application software that we are using in civil engineer. Mostly civil engineer use this application, and how AutoCAD is important in our present life, and what is the scope of this AutoCAD software, and how the AutoCAD software screen look, and how AutoCAD, what are the different AutoCAD commands are there, and what are the useful keyword keys for AutoCAD, and I will also draw some basic 2D figure in AutoCAD application. Okay, मैं आपके लिए कुछ AutoCAD 2D application में draw करूँगा. Okay, so what is an AutoCAD? So it is visible now. So the slide is changing. Okay, yes, sir. Okay, okay. So AutoCAD. So should I start again? Or so it is okay if I continue? Okay, I'm just starting from the same point. Okay, so AutoCAD is nothing. It is an application software which is the name has derived from auto with auto and
CAD CAD. So Auto is nothing. It is a company name that is the Autodex. Okay, and the auto is here. You can see Autodex. It is a company name. The first four letter has been taken from this company name, and CAD is a full form having computer aided design. Okay, and the this application has been developed by John Walker. इस application को किसने बनाया? John Walker ने बनाया. ठीक है. AutoCAD is what? It is a USA based company. ये USA based company की एक application है. Okay, it is widely used by architect, engineers, construction professional in industry for 2D and 3D modeling. Okay, so it is used by engineers, architects, and many other professionals. Okay, in different sectors. Okay, it is not bounded with only civil engineer or your architect. It is mostly used in every sector. Okay, uh, for designing purpose and drafting purpose. Now, next, uh, what is used for? It is used for drafting. It is used for anode, and designing 2D geometry and 3D model, and many more. It is used for many more purposes. Okay, so what is drafting? Drafting is nothing but making any 2D layout. Okay, or uh, making some any designing work. What is anode? Anode is nothing but giving description or detailed information about the what you have drawn. अगर आप किसी चीज को आपने ड्रॉ किया है तो उसका मेजरमेंट क्या है, लेंथ क्या है, आप उसका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, एनोट इसे रिप्रेजेंट बोलते हैं. ओके, एंड इट इज टू डी ज्योमेट्री वर्क एंड फॉर 3D मॉडल वर्क. तो आपको पता है. नाउ दिस इज वन मोर the important point that AutoCAD software was launched by Autodesk company. When it was launched, it was launched in 1982. तो ये लॉन्च कब हुई थी? 1982 में जो लॉन्च हुई थी. लेकिन इंडिया में कब आई थी? ये इंडिया में ये 1988 में आई थी. Okay, so it was launched in America, in USA, at December 1982, but it came in India in 1988. Okay, these are the very important point. You must remember, you must note it, you must take the screenshot. Okay, why? Because these are the points it will be asked in your interview round when you go, and if you sit in front of HR, definitely he will ask questions from this point. Okay, and these are the more important point you must remember. Okay, now next. Now, why AutoCAD? हम AutoCAD यूज क्यों करते हैं? AutoCAD वैसे तो हमारे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं. We have lots of applications for drafting, drawing work, but why the AutoCAD it is important? AutoCAD important क्यों है? Because AutoCAD is used worldwide. AutoCAD ये worldwide सभी जगह, mostly every sector, in every part of country in world, everyone who are having designing work, they use AutoCAD. Okay, हर एक AutoCAD use करता है, because it was the first application who did this type of work. Okay, that is why it got famous rapidly, and that is why it is used worldwide with in each and every sector. Okay, all kind of industry use it for drafting, modeling, and design work. हर एक इंडस्ट्री और क्या करते हैं, यूज करते हैं ड्राफ्टिंग, मॉडलिंग और डिजाइनिंग के लिए यूज करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. AutoCAD software widely recommended to draft as it make drawing and drafting very easy and handy work. अब भैया बोले कि इसे यूज क्यों करते हैं, या क्यों यूज इसलिए किया जाता है कि ये easy to handle है, easy to learn है, और it is not so complicated. Okay, it is not so complicated, it is easy to handle. That is why it is what very suitable application for the person who are drafting. Okay, so it is handy. That is why this application is got famous worldwide. Okay, next. Now, why AutoCAD is necessary? Okay, AutoCAD necessary क्यों है? When you are having a degree, but if you don't have AutoCAD applications knowledge, or you don't have any AutoCAD course to show in your resume, so how it's affect okay, in your joining section, how in your career section, it also affect very much if you don't have this knowledge of AutoCAD. Okay, AutoCAD का knowledge
हर एक इंजीनियर जो सिविल इंजीनियर है उसे मस्ट होना ही चाहिए. ओके, क्यों? वजह, because if you have, suppose one student having college degree and plus having AutoCAD degree. Okay, so how it is important? It will make them industry ready. वो क्या है, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग वो रेडी है. ओके, और उसके पास क्या एक्स्ट्रा नॉलेज, दे हैव एक्स्ट्रा नॉलेज इफ दे हैव AutoCAD knowledge. Okay, and they will get easily selection when they will sit in their interview round. Okay, and it will make ahead from the other. Suppose a person, suppose a student or candidate, suppose there are two students. Okay, two candidates are there, and one having only college degree and one having college degree plus having AutoCAD knowledge with its full proof certificate. So who will you get selected first? Of course, the person who having college degree plus AutoCAD degree. Okay, so that is why it makes them ahead from the others. Okay, and it will also add impression on the person or on the HR who is taking interview. Okay, and the candidate will be surely selected. Okay, if he having AutoCAD knowledge and plus having degree. Okay, but it is not necessary that the person who are getting first job or first career opportunity, they it is only important for them. जैसा नहीं है कि जो कॉलेज से निकला है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि the person who are working in industry, civil industry or mechanical industry or any other industry, if they have the AutoCAD knowledge after after having to few year experience, okay, then what happens if they show this AutoCAD knowledge to their company, to their HR, then they will get promotion or they will get salary hike. Okay, so that is why it add impression uh, on the candidate, on the person if they have AutoCAD knowledge. Okay, it is very important in your building your career and boosting your career so that you can have the good salary in your hand. Okay, now it is very important software as I have said, and it will also help you to it will also help for your making your what industry ready. It will make you industry ready, and in this digital era, if you don't have this knowledge, then surely you are useless without college degree. Okay, you must have AutoCAD degree or and AutoCAD knowledge so that you can implement when you get if you get any job, suitable job, and if you don't have this AutoCAD knowledge, then surely you will not get selected in most of the places. Okay, now next. Okay, so these are the important points I have discussed about AutoCAD. Now I'm going to show you how the AutoCAD first screen looks. Okay, and the last you will get a few 10 to 5 minutes. Okay, for your questions, and you will get I will just solve all the questions if you face any difficulty. Okay, so just be in touch in this class till the last and uh, just ask questions in last 5 or 10 minutes. Okay, now this is an AutoCAD screen. Okay, so how the AutoCAD screen look like? So this is an AutoCAD screen. There are what this is file tab. Okay, you can see this is a file tab drawing. This is the name of the file. This is application menu, the menu. Okay, it is a main menu, and now this is the first bar, this is the first column. It is named as file name. Okay, and the next is your this is what this is menu bar. ये menu bar है और उसके बाद क्या this is the white portion. You can see this white portion area. Okay, this is called ribbon. Okay, this is ribbon. Okay. Hmm. So this area is white. This white area portion is your ribbon, and the next is your user coordinate system. This is the coordinate system x and y axis because
We are drawing in is in this graph. It look like in graph. Okay, there are many grids are there. So this is a 2D screen you can see here. So that is why it is X and Y. Okay, if we convert this screen to 3D one, then you can see X, Y, and Z. Okay, so this is a coordinate system. It will represent you that in which axis you are using. Okay, in which axis you are implementing your figure. Now, next is your layout button. This is your layout button. Okay, what is the layout button? It is just an X. This is a page uh, that it will help you to how to print. Okay, we will learn this later on. Okay, and this is your command window. This is your command window. Whatever the command you will put, it will show here. Okay, now where we draw the figure, it is known as working space or drawing area. Okay, this is the working space. All these black spaces. Okay, this is a what? It is a drawing area. Okay, now you can see this one north, east, south, west. Okay, what is this? This is a world coordinate system or geocube. Okay, in which particular it will show your top view, front view, okay, bottom view, according to your drawing. Now this is your crosshair. What is crosshair? It is just like a mouse. Now, as we can you see the arrowhead of this mouse? So when you open this AutoCAD application, your mouse will be completed. This is your crosshair structure. Okay, and it will look like a just plus. Okay, now next, what is this? This is as I said, this is a ribbon, and in this ribbon you have many commands. Okay, what are the commands, and what are the group of command is? There are many group of command are there, and they are and those are called tabs. Okay, so the underlying portion has been represented. The one is draw, then modify, layer, annotate, annotation, block, properties, and many more are there. Okay, so what are the this what are these? These are nothing, just like it is only command. Okay, when we draw, use अगर हम ड्रॉ करेंगे इस पेज में तो हमें कुछ क्या चाहिए, पेन चाहिए, स्केल चाहिए, और उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, उसके लिए हमें कुछ टूल तो यूज करना पड़ेगा. एंड जस्ट गिविंग वन एग्जांपल, suppose I have given you one task to draw a circle. Okay, in your copy. Okay, then what you will do, you will just take up one pen or pencil. Okay, and after that you will just draw simple figure in your white space. So just like that, before drawing anything, you must have one tool. So these are the tools, or you can say this is a command. With the help of this, we draw, we edit, and we annotate, we measure our drawing. Okay, whenever we are drawing. Okay, okay. One is saying that sir, background disturbance आ रहा है. क्या disturbance आ रहा है? Is there this sound option? Hmm. You are getting any noise? Or I am not having a clear picture. Okay, is there any clarity of picture? Do the video is clear or audio is clear or having any disturbance? Okay, I am audible. Okay, the audio is clear, or Yes, sir. okay. So I'm just continuing this. Okay, this demonstration. Hmm. So okay, okay, thank you very much. Now, uh, these are the different tabs. Okay, and it having some commands, or we can say the tools through which it helps us to draw. Okay, in this workspace, working within this working area. Okay, I will give a clear demonstration. Okay, how to use. Okay, after opening my software application, and you will clearly get the idea that how I am drawing and how it is in accessible. Okay, how it is accessible? Huh? Next.
So AutoCAD command. So what are the AutoCAD command? I just have said that there are many commands, there are many tools which help us to draw, okay, edit in this AutoCAD applications. So in AutoCAD, nearly every action performed in AutoCAD based on command. Okay, AutoCAD responds with AutoCAD prompt. So what is AutoCAD prompt? I just have said this is what? This is window command window. Okay, जब भी हम कोई भी कमांड यूज करेंगे तो यहाँ पर वो रिप्रेजेंट होगा ओके एंड यू विल गेट आइडिया एंड यू विल गेट इन्फॉर्मेशन दैट व्हाट आर द टूल्स यू आर यूजिंग आप कौन सा टूल यूज कर रहे हैं ये यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा ये यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा और आपको नॉलेज आप देख सकेंगे कि आप कौन सा कमांड या टूल यूज कर रहे हैं ओके एंड यू विल गेट अवेयर यू विल ऑलवेज गेट अवेयर इन दिस विंडो कमांड ओके now next what are the useful key in your keyboard while using AutoCAD okay and it will also make you easier so that you get while using this key you can save your time okay you must note it before okay before if I change this slide then you will not get to see it again before that just note this one okay I'm just saying what are those keys this is F3 okay ऑब्जेक्ट स्नैप 2D ये क्या है F3 है इससे हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप 2D में हम लोग यूज करते हैं तुम लोग पूछोगे कि सर ये ऑब्जेक्ट स्नैप क्या है मैं बताता हूँ ओके जस्ट नोट इट आई विल क्लियर ईच एंड एवरी डाउट ओके नाउ what is F4 object snap 3D okay object snap 3D now next is your F7 F7 is what that is grid display what is grid display this grid display क्या होता है F7 से देखिए you can see this grid okay this is x this is line straight line so these are known as grid okay you can turn off this grid up and you can also on this grid it is depend upon you how you use it okay now next and I will also demonstrate this one each and every command and key while having practical okay the last so you must continue with me till the last don't just skip from this demo classes it is very important and it is I will tell you how to what are the basic things you must know okay now next what is ortho mode what is ortho mode ortho mode is nothing just it is help you to draw line in straight okay or any tilt line okay this is your ortho line this is 90-degree angle you can see this one this is a ortho angle okay or you can send the PPT. It is very informative. Yes, I will send my PPT. Okay, and yes, it is very important. It is not very important. It is very important. Okay, you must take a screenshot. Okay, if by chance if you face any difficulty while having this PPT, okay, or to having this PPT or PDF, before that you must take a screenshot. Now. Now, what is F10 polar tracking? It will track your key tab. This is what? This is your mouse button in your AutoCAD. So आप जिधर भी जाइएगा कहीं भी मूव कीजिएगा तो ये आपको ट्रैक करेगा. Okay, just like your your location. When you turn on your Google location, तो क्या होता है Google location आपको ट्रैक करता है. Where are you moving? Okay, so just like that, it is F10 is used for polar tracking. Okay, it is mostly used but not mostly used okay in some places we use this one now what is escape exit what is escape is nothing but exit any command okay so what is escape and what is why it is important देखिए suppose you are drawing your page okay you are using a pen so you are using a pen to draw a circle but in the next I just have said that take pencil and draw one more circle so what you will do you have to just keep this pen aside and you have to just pick up the pencil and then you can draw using your pencil okay आप क्या कर रहे हैं पेन को पहले रख रहे हैं उसके बाद पेंसिल उठा के फिर आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं ओके तो आपने कुछ टूल को छोड़ा वो क्या था पेन को छोड़ दिया तो इसी तरह जब हम लोग यहाँ पर
कोई भी कमांड को छोड़ते हैं या फिर उससे क्या करते हैं, एग्जिट होना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके बटन को क्या करेंगे, क्या करेंगे, उसे प्रेस करेंगे। ओके, आप क्या इसके बटन अपने कीबोर्ड में देख सकते हैं, इन द लेफ्ट टॉप लेफ्ट ऑफ योर कीबोर्ड। ओके, यू कैन सी द एस्केप बटन। तो अगर आप एस्केप बटन दे तो आप हर एक कमांड से आप बाहर निकल जाइएगा। उसके बाद आप फ्री टू है कोई भी कमांड को या कोई भी टूल को यूज करने की। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। आई विल गिव ईच एंड एवरी डेमोन्स्ट्रेशन after this PPT. Okay, I will give live demo. These are the points you must remember. Okay, that is why I'm saying this PPT work. Now next is your enter key space bar. Enter key and space. Invoke the last use command. So invoke last use command. What is the meaning of this? The meaning of it is that if you suppose you have drawn a line, okay, you have just drawn and but you have just skipped, आपने skip क्या क्या दबा दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि दोबारा लाइन यूज या दोबारा उस लाइन के कमांड को मैं यूज करूं, तो जस्ट डू एंड एंटर और जस्ट प्रेस अ की बार। ओके, आप जस्ट एंटर क्या की प्रेस कीजिए या फिर स्पेस बार आप क्या क्या प्रेस कीजिए, तो आप उस कमांड को क्या हो जाएगा, आपके क्या वो कंट्रोल में हो जाएगा, आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या है, आपको ये बार बार यहाँ लाइन में जाना नहीं पड़ेगा। ओके, तो जस्ट लाइक दैट इट इज यूज। आई विल क्या करूँगा, मैं इसे बताऊंगा। ओके, आई विल टेल यू दिस नाउ। Before that, I will also want to share very important 2 points. Okay, for an learner who having zero knowledge in AutoCAD, and if they are going for interview, these are the 2 points you must remember. Okay, that what is unit and what is dimension. Okay, unit और dimension ये जो दो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, now what is unit? यूनिट को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि सपोज आई वांट यू टू ड्रॉ a 1 centimeter or 10 centimeter line. Okay, then what you will do, you will just pick up a 30 centimeter scale, okay, from the toolbox, and you will draw in your page. Okay, it is just like that. But if I say just draw 1 kilometer line, then what you will do? Okay, it is not so much easy. uh, in this way you are using two dimensions, one is centimeter or millimeter or in kilometer. Okay, so according to that you must have space. It must you can recognize, what you can say that in which dimension you are what suitable, okay, in your drawing. So just like that, in AutoCAD application, if you're drawing in millimeter scale, so you must fix the unit of millimeter. Okay. Suppose if you are drawing and kilometer space size design, then you must set your unit in your kilometer range. Okay. तो अपने पेज को हिसाब से सेट कीजिए। उसके बाद अगर पेज सेट नहीं कीजिएगा तो आप अगर आप मिलीमीटर के जगह किलोमीटर को यूज कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ड्राइंग उल्टा पुल्टा हो जाएगा और it will not get what perfect dimension. Okay, and uh, it will out of your what in your drawing layout. Okay, so what is unit? How to select unit? This is unit, just type un. Okay, when you will type un in your keyboard, then in your command prompt you will see un and just enter it, then one dialog box will be appear here. Just select the dimension, precision 0, and your what your small scale. Okay, the minimum scale in which you are using, then press ok. Okay, then see, I'm using this one, and I will also demonstrate this also in your practical. Okay, just wait 5 minutes. Okay, just continue with me for 5 minutes. I will demonstrate it in live practical. It is just a screenshot, but don't go anywhere. Okay. Now this is a unit. You will get dialog box like this. Then select your type of length.
एंड योर प्रिसिशन, व्हाट द प्रिसिशन विल बी, आपका प्रिसिशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपका क्या होगा, योर योर यूनिट स्केल और जो मिनिमम स्केल, आपका मिनिमम स्केल क्या होना चाहिए। प्रिसिशन क्या होता है, अगर आप ये देख रहे हैं 0.0, 0.00, 0.00, तो आपका क्या है लास्ट यूनिट, डेसिमल यूनिट जो होता है वो आपका कितने रेंज तक होना चाहिए, कितने रेंज तक शो करना चाहिए। ओके, ये आपका प्रिसिशन है और ये क्या है आपका लास्ट स्केल है। ओके, आप मिलीमीटर तक यूज करना चाहते हैं या सेंटीमीटर तक ही यूज करना चाहते हैं, दिस इज द यूनिट। ओके, नेक्स्ट इज डायमेंशन। व्हाट इज डायमेंशन, सपोज यू हैव ड्रॉन अ फिगर, आपने एक फिगर ड्रॉ कर दी है, उसके बाद आप देखना चाहते हैं कि ये लाइन है कितने का, इसमें इससे कितना डायमेंशन क्या है, तो डायमेंशन आपको शो करना, वो आपको दिखना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन सेट करते हैं। व्हेन आफ्टर सेटिंग यूनिट, यूनिट सेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन सेट करते हैं। ओके, so again type D. So this is a shortcut key command. Okay, D. You must note this one. D. Then you will get your this dialog box. Then press modify. Then you will get like this screen. Then just set your primary unit. Okay, the primary unit will look like this. Then again select the same what your format, unit format as you have selected in your unit portion। आपको यूनिट पोर्शन में जो आपने स्टाइल से सेट किया था उसके स्टाइल से आपको यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, दोनों मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो आपका क्या होगा, जो ड्राइंग लेआउट है वो क्या होगा, डिस्टर्बेंस उसमें आपको दिखेगा और आपको इजी, आप उसे बाद में क्या एरर्स आएंगे और बाद में वो आप क्लियर नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो we must set the dimension as per the unit। Okay, so again in this also decimal precision, same precision, and then at the last page, okay. Okay, now this is a line, how to draw a line. I will just right now I will explain you. Okay, this is just a screen, you can take the screenshot. Okay, how to draw a circle, how to draw a line. Um, okay, now these are some practical that right now I will draw in front of you and you will get to know how I am using this application. Okay, so these are the few drawings for your practical or your for extra for practices. Okay, now huh, now before that I want to share this one that according to my view, आप ये कर सकते हैं, you can download the software, Autodesk software from Autodesk website directly from Autodesk what Autodesk company website, or you can just go get into PC. Okay, this is the website. Just visit in this website and just download Autocad software having 64-bit application, because it will get suitable, it is suitable to download 64-bit application। Okay, because of the it is functionality, ये फंक्शन अच्छे से करता है इसलिए आप 64-bit से डाउनलोड कीजिए। ओके, now at the last we will have question. Now I want to share the AutoCAD screen. Okay, I request everyone student just don't leave the session and just continue with me. And I am now going to do practical. Okay, these are the few drawing I am going to demonstrate it. Okay, and what are the scope of this AutoCAD? It is not based only 2D. It is also you can sketch, you can draft in 3D way. Okay, now. Okay, one question has came that we should download crack version or trial version. Okay, if you're having if you don't have earlier software application in your computer, just download trial version. Okay, it is taken upon you, and it will work till the 30 day, and the 30 day is very much sufficient. Okay, to perform this application. Okay, and if you're having if you are able to download the crack version, then it totally depend upon you. Okay, so I have given one reputed site where from you can draw. One question has came that sir, many students know AutoCAD. Okay, don't draw mechanical drawing, you just tell civil. Yes, this is a civil what engineers who are having civil engineering degree, or who are the student pursuing civil engineering degree. It is totally based on their, okay, I am a civil engineer, and
I will tell you how to draw uh, a civil. It is just a what? It is just an example. Okay, ये example है. You can see the I section, C section, and this is just for practical knowledge. Okay, don't think that you will directly jump to the your planning work. आपको अगर प्लानिंग वर्क अगर सीखना है तो इसके लिए आपको ये बेसिक ड्राइंग आपको भी करना चाहिए, मतलब आपको होना चाहिए कि नॉलेज की हाउ टू ड्रॉ दिस वन. ओके, दे आर इमेजिनेशंस ऑफ ड्राइंग. ओके, ये इमेजिनेशन है आपके ड्राइंग में कि आप कैसे यूज करें एप्लीकेशन. ओके, इट इज जस्ट लाइक अ पेपर एंड योर पेन or pencil that we are using and just sketch it as it is. Okay, but you have to know how to hold the pencil. If you don't know how to hold a pencil or pen, then you will not able to draw. Okay, so that is why you must aware of this application. Okay, now next, I'm just opening, I'm just sharing the screen. Okay, AutoCAD screen, just wait a minute. Okay, okay, do it visible, the screen, AutoCAD screen is visible. Do this screen visible, क्या screen ये दिख रहा है आप सभी को, शेयर हो चुका है, so that I can start the live demos how to use this application, the basic point. Okay, this is a basic 2014 application. Okay, because it is according to my student, it is I mean, it's operate nicely. Okay, according to the 2016. Okay, most of the engineers use 2014 only. Okay, and you will get each and every same view. Okay, same experience. Okay, as you are giving 2016. Okay, so don't worry about this one. Okay, so I think you are getting this screen visible in your screen. Yes. Okay. Okay, this is visible. Okay. Now, just from this point, just be attentive how I'm using, and just if you want to note, then just please note it. Oh, okay. Now I'm closing this chat option. Now next. Now, as I've said, first step before using this application is that you must set your unit UN, and the next one is your dimension. Okay, so I'm now going to set the unit. How to set unit? So this is your command prompt. Okay, this is the tools, all these tools, and this is tab option. These are the tools, uh, the line, polyline, circle, arc, and this is a modify option after drawing. So this is a drawing. This is a what? Your pen and pencil. Okay, and this is your modifying option, that how to edit. Okay, and this is a layer option, I will tell you later. And this is your anode, with how to represent and what to represent your drawing. Okay, and then this is your block. Okay, and this is a layer property option and many more options. Okay, now I'm going to set unit. Okay, now typing u and n. Okay, you just click in this command u and n. As this AutoCAD application is it is heavy application, so it will lag. Okay, I'm not hoping that it will lag, but if it can. Okay, so start view and end view and okay unit. Mhm.
Okay, many more students are okay, some are joining, some are leaving. There's a fluctuation in the participant. Okay, so just enter. I just press and enter, and you will see the dialog box option. This one, it has been appear, so it is visible, or it is having lagging. So lagging का issue चल रहा है क्या, या फिर it is okay. Do is ये क्या lagging हो रही है? Is it lagging? No. Okay. Okay. So, so it is a very important command, that is UN, and it is what? It is your, again I'm saying, this is are the interview questions. You must note this one. It is very important. Whenever you go in any round of interview, then they will say that how to set unit. If you don't know how to set unit, then they will completely know. उन्हें सब पता चल जाएगा कि भैया बच्चे को कुछ पता नहीं है, बस बच्चा फेंक रहा है. ओके, और उन्हें बस ऑटोकैड का एप्लीकेशन को दिखा दिए अपने रिज्यूमे में कि भैया मुझे ऑटोकैड आता है, लेकिन अगर if you don't having this knowledge of AutoCAD, okay, then this is a starting point now. You must know this one. Okay, so how to set unit? Just I've said, uh, select your type of length. Okay, so there are a few options are there: architecture, decimal, engineering, fractional, center. But we are using here in this decimal. Okay, now, when you select decimal, you can see there are precision. You will face like this, 0.0000. Okay. Now, if I select architecture, then what will happen? It will appear just like an inch, foot. Okay, like that. So we will draw the simple lines. Okay, that is decimal, and just I am setting a precision of 0. Okay, and I will set your last scale dimension, that is a millimeter. Okay, millimeter. Now that is okay. You can select as per your requirement, millimeter, meter, kilometer. Just type there and from, okay, nanometer. So it is according to your requirement. Okay. So I just click here millimeter and okay. Okay, unit is set. The next one is what? Your dimension. Okay, so click here in the prompt, then D. Only type D and press enter. Okay, so here you can see the dim style. So it is dim style. Okay, D. Okay, dim style. Okay, I'm pressing it again. D enter. D enter. Okay, so this is your dimension style manager dialog box. Okay, then after that you have to select modify, then again you will face this one. Now, what I said, just select your primary unit. Just it again, you have to match according to your unit. जो आपने यूनिट में सेट किया था, सेम आपको यहाँ पे क्या करना है, इस आपके डायमेंशन सेट करना है. ओके, तो मैंने वहाँ पर डेसिमल सिलेक्ट किया था, डेसिमल प्रिसीजन क्या था, 0 था, तो 0. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करें, एक टेक्स्ट का एक हाइट डाल देते हैं. ओके, टेक्स्ट हाइट इज योर, जस्ट आई एम प्रेसिंग एट 10. You can also put 1 also. Okay, 10. So this is what 10. This is the millimeter. The last primary unit I've said that it is millimeter. In the unit person, it will show that in your millimeter. Okay. Okay, 10. Okay, then close. Then your unit and your dimension has been set. Now you are okay. Now you are free to draw your drafting work. Now आप free है definitely. तो क्या करेंगे, हम पहले एक line draw करते हैं. How to draw a line? Just select here. Go to line option. ओके, आपने टूल एक सेलेक्ट कर लिया है, ये आपके हाथ में टूल है. ओके, यू कैन सी द क्रॉस हेयर साइन एंड जस्ट click in anywhere screen and draw. Okay, can you see the point? This is 7, 8, 10. Okay, this is visible, so this will say, it will tell you what are the length of the line. Okay, so I'm just you can type directly from the keyboard or you can see the screen. आप स्क्रीन में देख सकते हैं हम कितने लाइन लेंथ को बढ़ा रहे हैं. जैसे मैं देख रहा हूँ कि 10 है,
11 हो गया, 12 हो गया, इस तरह से. Okay, so it will make very complicated, but if you type directly from the keyboard, okay, just 10, or I'm just doing 50, 5, 5 and 0. Okay, so it is visible. आपने देख रहा है कि यहाँ पर भी चेंज हो गया है, यहाँ पर 50. तो प्रेस एंटर. Okay, enter. You can see the line has been drawn. ये देखो लाइन का ड्रॉ हो गया, और इसे आप छोटे बड़े कर सकते हैं अपने माउस से, या फिर अपने माउस पैड से आप कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. ये देखिए, ये दिस 26. यू कैन कंटिन्यू. आप मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ. मैं ये क्या किया हूँ, अपने इस लाइन को, लाइन कमांड को मैं क्या किया हूँ, स्किप नहीं किया हूँ. मेरे हाथ में पेन है और मैं ड्रॉ कर रहा हूँ पेपर में. ठीक है, अगर मैं ड्रॉ करना बंद कर दूँ, क्या करना चाहूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्किप बटन टिपना पड़ेगा. ओके, इस कमांड से निकलने के लिए. तो आई एम जस्ट प्रेसिंग स्किप. ओके, स्किप. नाउ मैं स्किप से बाहर हो चुका हूँ. ठीक है सर. सर, सर विजिबल क्या बोल रहे हो? ओके, ओके, ओके. वो नाउ नेक्स्ट. तो मैं ड्रॉ कर लिया लाइन. ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि मैं लाइन को ड्रॉ कर लिया. उसके बाद अगर फिर मैं चाहूंगा कि अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, तो क्या होगा, मैं तो स्केप हो चुका हूँ इस लाइन से. नाउ आई एम फ्री टू टेक एनी अदर टूल. मैं अब दूसरे टूल को यूज करता हूँ. ठीक है, क्या टूल करूँगा, तो एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ. ओके, सर्कल ड्रॉ किया. यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शन है. सर्कल कैसे ड्रॉ करना चाहते हैं, अगर आप रेडियस से ड्रॉ करना चाहते हैं, डायमीटर को लेकर ड्रॉ करना चाहते हैं, या फिर कोई 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, एक्सेट्रा. ओके, how you want to draw your circle, with using the radius, if you are using your diameter. Okay, so there are many ones. I want to draw the circle with the help of radius. Okay, according to my radius. So I have selected this one. Just again, uh, in the screen, I'm just clicking here. Okay, what I'm doing, I'm just clicking left click. Okay, now drag it, give your side. I'm just giving here 20. Okay, 20. Okay, now press enter. Now this is a circle having 20 millimeter radius. Why I have said why I have said 20 millimeter, because I have selected my dimension in millimeter. मैंने क्या किया था यूनिट में, अपने क्या डायमेंशन में, यूनिट में क्या किया था, मिलीमीटर सेट किया था. तो ये मिलीमीटर के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ हो रहा है. ओके, ओके. Okay, there are few minutes is left. So I'm just मैं आपको जल्दी से फ्यू कमांड और सिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन सेशन होंगे. उसके बाद फिर आपने जो क्वेश्चन है वो पूछे और मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, नाउ ये हो गया, मैं ड्रॉ सर्कल किया है. फिर अब मैं जैसे बोला था कि एनोट कैसे करते हैं, मैं इसका मेजरमेंट चाहता हूँ कि दिखे कि इसका रेडियस क्या है. सो मैं क्या कर रहा हूँ, इस एनोटेशन ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या लाइन्स ऑप्शन है, तो मैं लाइन ऑप्शन सिलेक्ट किया. और देखिए, ये यहाँ पर एक पॉइंट शो कर रहा है यहाँ, और द एंड पॉइंट. ओके, you can see this is 20, so it is showing 20 centimeter radius. Okay, now I want to do a straight line. मैं straight line draw करना चाहती हूँ. तो मैंने क्या बताया था, आपका क्या है, शॉर्टकट की कमांड है, क्या है, ऑर्थो. मैंने बताया था ऑर्थो एक कमांड होता है. तो यहाँ पर देखिए ऑर्थो क्या है, दिस इज लाइन, दिस इज, यू कैन सी दिस परपेंडिकुलर लाइन. So ortho mode F10, F8. Okay, so you can press correctly F8, or just select this option from in your screen. So I'm selecting this here from the screen. Okay, so ortho is on. Now pick up the line again, take your screen and draw here. Now this is your straight line. Okay, ये straight line हो रहा है. ये क्या, ये कोई भी curve line नहीं हो रहा है. Not a ये tilt line भी नहीं हो रहा है. ये क्या 90 degree line यहाँ से बन रहा है. Why? Because I just own the ortho option. Okay, this, this, this. So it is 90 degree. Okay. Now if I want to close this ortho option, just again ऑफ दिस ऑप्शन, इसे ऑफ कीजिए. और उसके बाद क्या होगा, ये इस तरह से आपने ऑटो ऑफ कर दिया. दैट इज व्हाई यू आर एबल टू मेक टिल्ट लाइन. ओके, नाउ और इस लाइन से आप इस कमांड से बाहर जाना चाहते हैं, क्या क्या करेंगे, इसके बटन को प्रेस करेंगे. ओके, नाउ ये क्या ग्रिड आपको शो कर रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ग्रिड यहाँ पर है. ये ऑफ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, दिस इज योर ग्रिड ऑप्शन. ओके, दिस इज F7. ओके, दिस इज F7. ओके, फिर ये क्या ऑफ हो गया.
Now मैंने क्या बताया था कि snap, what is snap? That is F3 and F4. So this is nothing but this is you can see this here. It is a 2D snap. Okay, F3 and this is a 3D snap. ये snap होता क्या है? Just like a magnet. अगर आप magnet का है तो पास है तो क्या होता है, वो metal को क्या करता है, touch कर देता है. Okay, तो just it will work just like a magnet. अगर आप मैं line को draw करूँ, okay, ये क्या है यहाँ पर, ये snap of on है. तो मैं line लिखता हूँ, लाइन लिया और मैंने देखिए ये हाईलाइट ऑप्शन हो जा रहा है, ठीक है, कि मैं इस लाइन में टच कर रहा हूँ. ओके, और देखिए कैन यू सी दिस वन लाइन. सो इन द एंड आपको क्या दिखेगा, इट इज स्क्वायर. इन द अदर एंड यू कैन आल्सो सी द स्क्वायर, द ग्रीन कलर, you can see the green color, so it is representing the square option that is your in the end point. If you comes in the middle, then it will appear, the green will appear in a triangle way. Okay, so I want to draw the line here from the center of this line. Okay, just click it and draw it. Okay, again escape. Okay, escape. Okay, now I'm putting just off I'm just putting this off. Now off. Again I'm drawing the line. I want to draw in the center of this line. See, but if it, as it is off, you can't see the green color as I'm moving this cursor in this line. इस लाइन में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये मुझे ये ग्रीन कलर का लाइन नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये ऑर्थो ऑन नहीं है. ओके, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि सेंटर से लाइन ड्रॉ, देखता हूँ सेंटर से लाइन ड्रॉ होता है कि नहीं. ओके, होगा ये इस तरह से. ओके, मैं स्केप, मैं बाहर हो गया लाइन से. ना मैं जूम करूँ तो लग तो रहा है कि ये दोनों सेंटर से हैं, लेकिन क्या सेंटर से है. ओके, see, here is the difference. Okay, this is a line drawn using snap, and this is line drawn using, okay, off snap. Okay, is having no snap. So you can see the clear difference. है ये क्या क्या लाइन में ये टच कर दिया. ओके, देखिए जूम कर रहा हूँ तो ये लाइन से बाहर नहीं है, लेकिन ये लाइन से बाहर है. ओके, okay, so this was the demo sessions for today, and now you can ask questions. Okay, please you can ask questions, and if you have any doubts, just please ask questions. Okay, I want to show there this. Okay, just like this. So these are the few for the few drawing that you can practice in your computer. Okay, so just like that you can draw this plan. You can draw like this plan. आप इस plan को just इससे draw कर सकते हैं, या फिर कोई आप कोई भी curve options या फिर कोई straight line इस तरह से आप draw कर सकते हैं. Okay, as it okay. So anyone having any questions? Okay, my slide is not changing. Is it changing right now? Yes, sir. Okay. So anyone having any questions? You can see that with the help of AutoCAD you can draw this type of plan. Okay, normal plan or any other designing work. Okay, or any 2D plan. Or you can also make 3D plan, but it is not, as I have not discussed here. Okay, but in this session we are only dealing with only AutoCAD with 2D. Okay, where does the north south cube used in AutoCAD? Okay, where does a north south cube? Okay, north south cube. आपका कहना है कि north south cube हम लोग कहाँ यूज करते हैं? हाँ, तो नॉर्थ कब साइड कब यूज करते हैं, जब हमें क्या कोई 3D मॉडल बनाना पड़ता है तब हम लोग क्या करते हैं, तो क्या कहते हैं, नॉर्थ क्यूब जो साइड है, व्यू ऑप्शन है, वो हम यूज करते हैं. ओके, कैन यू सी दिस वन हियर. Wait, just wait a minute. Okay, can you see this cube one? Okay, this is what. So this is just a view cube or world coordinate system. When using 2D 3D drawing, तो ये क्या होगा, आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, ये सब आपको क्या करेगा, शो करेगा, which will make you easy
to draw any particular drafting work. Okay. Any other questions? Okay. Can student ask with their with your audio because it's taking lots of time while typing. 3D ड्राफ्टिंग में क्या लगभग यूज होगा क्या लगभग 3D ड्राफ्टिंग में लैग बार क्या है लगभग यूज होगा राघव प्लीज राइट दिस वन क्लियरली व्हाट यू वांट टू से आप क्या कहना चाहते हैं 3D ड्राफ्ट में लगभग लैग बार हाँ सर, हेलो लेआउट सर। बटन हाँ हेलो Sir, what thing of civil engineering you will teach in this AutoCAD course, sir? okay so in this AutoCAD class I'm I'm I will teach you how to use this application, okay, in a 2D way, and I will demonstrate all the drawing tools. I will tell you how to modify, how to draw, how to use this application in all dimensions, form of way, and how to represent drawing, and what are the basic command and what are the basic modification uh, while drawing any what lines or drafting work so that you don't miss that point. Okay, before doing any 3D work or any other any what rendering work, you must know how to utilize this application in 2D way. So first of all, I will tell you how to use this application. I will give you tasks and basic tasks, and I will also demonstrate you how to uh, how to draw a civil planning work. Okay, and I will also give you tasks. I will also tell you how to draw a planning and what are the basic things you must remember before uh, planning any house building plan. I will make you sure that you must draw an elevation portion. Okay, just like this. Uh, I will tell you how to draw elevation portion according to the building plan. Okay, and I will tell you how to draw a duplex. As if you can say this is a duplex. Okay, so it will make you easy that how your ground floor and first floor is matching and according what are the different years occur. Okay, आपको क्या problem face होगा while drawing this. Okay, so I will give some projects. आपको मैं project दूंगा कि आप कैसे कीजिएगा. Okay, ये सब क्या रहेंगे आपके कोर्स में रहेंगे और many more. Any more other question? हम्म, बाकी सर आरसीसी की ड्राइंग वगैरह वो आप बताएंगे इसमें बनाना? हाँ, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्लानिंग सिखाऊंगा और आरसीसी ड्राइंग में आपको सेक्शन बनाना सिखाऊंगा. ओके, कि आपके ड्राइंग फाउंडेशंस है, इसके बाद फर्स्ट फ्लोर सुपर स्ट्रक्चर और आपका नॉर्मल जो आपके सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर के हैं, मैं आपको सेक्शन बना ड्रॉ करके दिखाऊंगा और आप भी कर सकिएगा. ठीक है. अच्छा, और फिर जब ये फाउंडेशन डालने से पहले सर जो लाइन प्लान बनाते हैं वो सर वो चीज़? हाँ देखिए, आप जो अपने जो लाइन प्लान हुआ ना, देखिए जब हम लोग ड्रॉ करते हैं कोई भी प्लान वगैरह जो भी हम, तो क्या करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द मेजरमेंट ऑफ बाउंड्री. मैं बाउंड्री का मेजरमेंट करता हूँ, फिर अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैं क्या करता हूँ प्लान को एग्जीक्यूट करता हूँ. नॉर्मल ये मैं प्लान ऐसा ड्रॉ करूंगा. उसके बाद क्या होगा, कॉलम पोजिशन, व्हाट आर द पोजिशन ऑफ कॉलम विल बी देयर, एंड उसके बाद फिर क्या व्हाट आर द डिफरेंट स्पेसेस, यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेसेस. आपको मिनिमम स्पेस में क्या यूटिलाइज मैक्सिमम कितना करना है वो मैं आपको इसमें सिखाऊंगा. ठीक है. अच्छा. And one more is question that how to join this class from Sri Lanka. No problem. You are having the same timing as we have in India. Okay, so you can join. Uh, uh, just purchase this session, purchase this AutoCAD class. Okay, you will get the timing schedule, and after that you can ask Protrainy. Yeah, the Protrainy member will help you to join. Okay, please sir, help him. The name of the So person. everyone, I have shared a link for registration.
Kindly go through the link and register yourself for this course. Okay, I also request to join this AutoCAD class, okay, for 21 days, and I will make sure, and I will 100% I will make a person having zero knowledge in AutoCAD, I will make them from zero to, okay, मैं उस हर एक बंदे को जीरो से हीरो बना दूंगा अगर वो इस सेशन को अपने ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं मेरे साथ 21 डेज के इस कोर्स में. ओके, एंड डोंट फॉरगेट to to have these subscriptions. Okay, please, and buy this subscription and join with me. Okay, how it was my session, as it was डेमो क्लास, ये आज डेमो क्लास था तो मैं आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, लेकिन मैंने आपको इस सेशन में वैल्यूएबल पॉइंट आपके साथ शेयर किया हूँ. ओके, तो अगर आप इस वैल्यूएबल पॉइंट को और गेन करना चाहते हैं, एक्सेस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ कंटिन्यू रहिए. जब भी क्लास स्टार्ट होंगे आप मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यू रहिए. ओके, एंड ऑफ कोर्स आई विल मेक श्योर दैट आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो. ओके, सर ये ऑटोकैड सीखने के बाद फिर जो आपका कोर्स है ये मतलब सर किस किस बंदे पास फिर जॉब मिलेगी हमें? देखिए, आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आप कौन से बैकग्राउंड से हैं बताइएगा. सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, क्या है? हाँ सर, बीटेक सिविल सर. बीटेक. हैव यू परस्यूड और यू आर कंटिन्यूइंग? सर लास्ट टाइम चला सर. लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, डेट 8 सेमेस्टर आपका चल रहा है. ओके, तो आपका जब 8 सेमेस्टर में क्या होगा, आपकी कंपनी में कंपनीज आएंगे या फिर आप आउट कैंपसिंग के लिए जाएंगे, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप बहुत सारे स्टूडेंट्स के लाइन में रहेंगे, क्यू में रहेंगे. ओके, तो अगर आपको यहाँ पर जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में दिया था, इंट्रोडक्शन के बाद कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ ऑटोकैड सॉफ्टवेयर, इट विल मेक यू अहेड फ्रॉम द अदर. आपको आपको अहेड रखेगा, आपको आगे रखेगा किससे, जो बंदे को ऑटोकैड नहीं आता है. ओके, सपोज यू आर इन एचआर, आप अगर एचआर हैं तो आप क्या किससे सिलेक्ट कीजिएगा, जो बंदे को नॉलेज एक्स्ट्रा है या फिर कम है. एक्स्ट्रा है उसे सिलेक्ट कीजिएगा. ये आपके सिलेक्शन परसेंटेज को इंक्रीज करता है. ओके, एंड यू ऑल्सो मेक मोर इम्प्रेशन टू द एचआर. ओके, तो अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं मैकेनिकल के बोल सिविल का ही बोल रहा हूँ, मैकेनिकल वाले भी क्या करते हैं, ऑटोकैड उन्हें पता है तो वो नॉर्मली उन्हें प्रेफरेंस मिलता है. ओके, नहीं तो सर क्या बोलती है ये जो ऑटोकैड है सर सिविल का, तो सर हर बंदा सीखता है इसको, तो सर फिर कैसे फिर डिफरेंस आएगा फिर? नहीं देखिए क्या होता है ना, अगर आप ऑटोकैड एक बंदा को नॉर्मल आता है, देखिए एक चीज और है, आप कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक फेस टू फेस इंटरव्यू दिया, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने रिज्यूमे में ऑटोकैड लिखा है, तो कंपनी क्या होता है, आपको आपको बोलेंगे देखिए ये आप सिस्टम है, ऑटोकैड ऑन कीजिए, आप खुद बोलेंगे ऑटोकैड ऑन कीजिए और मुझे ये प्लान बना के दिखाइए. तो उस समय क्या होगा, जो बंदे को अगर थोड़ा मोड़ा ऑटोकैड आता है ना, वो फंस जाएगा. ठीक है, क्लियरली फंस जाएगा. और जिसे ऑटोकैड अच्छे से आता है, नॉर्मल से बेसिक हर एक नॉलेज है, तो वो क्या करेगा, उस चैलेंज को निकल के वो पार हो जाएगा. तो उसमें क्या होता है, क्लियर होता है कि भैया ये दूध का दूध पानी का पानी नहीं है. ठीक है. अच्छा तो फिर जो बिगनर वाला बनाएगा और जो हम्म. और जिसने अच्छे से किया होगा उन दोनों में हम्म. फिर डिफरेंस कहाँ पे आएगा फिर? देखिए वो तो मैं क्या बोला, ये तो बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस के लिए क्या मैं उस लेवल तक पहुंचाऊंगा कि वो बिजनेस नहीं रहेंगे. ऐसा तो नहीं है ना, ये और सेशन लेने के बाद वो बिगनर ही रहेंगे, नहीं है. मैं तो उस लेवल तक पहुंचा दूंगा, जैसे आप मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपने ये जो प्लान बनाया, ये प्लान देख रहे हैं, एलिवेशन और ये प्लान है, इस लेवल तक मैं आपको ये क्या कर दूंगा, आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ ये ऐसे एग्जीक्यूट कैसे करें. ठीक है, तब तक आप तो बिगनर रहिएगा नहीं, तब तक आप तो वेल एक्सपीरियंस हो जाएंगे. ओके, एंड 21 डे इज वेरी मच सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा टाइम है, आप सीख सकते हैं आराम से. ओके, बस फिर जो ये आर्किटेक्ट काम करता है इसमें और जो से एक सिविल इंजीनियर काम करेगा, तो फिर दोनों में फ़र्क कहाँ आएगा फिर? देखिए आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का डिफरेंस तो आपको शायद पता ही होगा, क्योंकि हाँ. सिविल इंजीनियर क्या होता है, वो स्ट्रेंथ, मटेरियल क्वालिटी, और उसके बाद बहुत सारे क्या पैरामीटर और उसके बाद क्वालिटी, ये सब से वो क्या करता है, डील करता है. ठीक है. और आर्किटेक्ट क्या था, वो मोस्टली डिजाइनिंग वर्क, डिजाइनिंग हाउ इट विल लुक. तो वो बस वो 4 साल 5 साल तक वो बस डिजाइनिंग सीखा है कि कैसे डिजाइन किया जाता है. लेकिन सिविल इंजीनियर क्या करता है, और टोटल उसके फिजिकल स्ट्रेंथ और क्या होता है तुम्हारा टोटल लोड कैलकुलेशन, ये सब भी वो सीखते हैं. तो इसलिए सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में फर्क पड़ जाता है.
और आर्किटेक्ट अगर हैं तो आर्किटेक्ट को तो भैया ये तो एप्लीकेशन आना ही चाहिए, ठीक है। और सिविल इंजीनियर को मतलब ये भी आना ही चाहिए। मैं पूछ तो रहा हूँ हाँ जी, तो आर्किटेक्ट का लॉस कहाँ होता है? आर्किटेक्ट का लॉस जहाँ तब होता है अगर उसे साइट इंजीनियरिंग के लिए वर्क कर दिया जाए, तो वो साइट इंजीनियरिंग वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो भैया कंप्यूटर में ही बैठा था 4 साल, डिजाइनिंग किया था, साइट वर्क का कोई एक्सपीरियंस से गेन नहीं है, प्रैक्टिकल का कोई से गेन नहीं है। तो सिविल इंजीनियर को अगर ऑटोकेड आता है और उससे प्रैक्टिकल नॉलेज और उसके बाद फिर मटेरियल क्वालिटी वगैरह ये सब अगर क्या आता है, तो उससे क्या होगा, उससे सिलेक्शन इजी होता है। और आप देखेंगे कि मोस्टली जो उनसे निकला जाता है वो सिविल इंजीनियर के निकलता है, आर्किटेक्ट के लिए बहुत कम निकलता है। ओके। नहीं फिर तो जो ये प्लानिंग करेगा वो तो फिर आर्किटेक्ट अच्छा करेगा ना, क्योंकि वो प्लानिंग सीख के 4 साल है। तो सिविल वाले फिर तो ऑटोकैड वो अच्छा चलाएगा ना आर्किटेक्ट। देखिए आर्किटेक्ट का भी जो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो वो यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इस ऑटोकैड को अपने हिसाब से इनहेंस कर सके अपने नॉलेज को, ओके, तो आप ऑटोकैड जो चला रहे हैं आर्किटेक्ट, उसे आप भी फेल कर सकते हैं। इट डिपेंड अपॉन यू, आप हाउ यू आर कैपेबल, हाउ मच यू आर कैपेबल, इट डिपेंड अपॉन यू। ओके। बस फिर जो ये रूम वगैरह साइज, रूम्स का साइज वगैरह डिसाइड होता है फिर वो मतलब कैसे होता है वो रूम्स का साइज कि इस रूम का इतना साइज रखना, इसका इतना। देखिए आज अभी आप तो 8 सेमेस्टर में हैं, तो अगर आप उसके बाद अपने सराउंडिंग में जाइएगा, आप प्लीज अपने लोकल कॉन्ट्रैक्टर, लोकल डीलर से या फिर से आप डिस्कशन कीजिएगा, नॉर्मल बात कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि रूम का साइज होना ही चाहिए इतना ही इतना। ओके। तो डिपेंड करता है, वो कंडीशन है, आपको बोल दिया गया है कि इतना इतने ये इस स्पेस में आप मुझे एक रूम बना के दीजिए, तो टेंट आपको उससे भी रूम को बना देना पड़ेगा। अगर आपके स्पेस में रूम का साइज उतना कैपेबल नहीं है, तो आप नहीं नहीं प्लान कर सकते, उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा। ओके। ओके, so we have another session lined up. Okay, and I think session has came to its end. Okay, so before that, before leaving, I just request all the participants who are live right now, please say, not share, just uh, what by this session. Okay, it's 21 session, and I will make sure that you will gain very much knowledge, and I will make you zero to hero in this AutoCAD application, and you will sit in each and every interview round, and I will, yeah, and any certificate can get, yes, you will get certificate. This is a Protrainy, okay, webs what organization, they will give you, okay, the main proof of what you will get your what certificate. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक छोटा सा हाँ प्लीज। प्लीज बोलिए। हाँ सर, जैसे सर जो ये सिविल सिविल वाला सर ऑटोकैड सीखने के बाद सर मतलब किस किस के पास जॉब कर सकता है। देखिए सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल करते हैं, साइट इंजीनियर करते हैं, डिजाइनिंग नहीं करते हैं, ड्राफ्टिंग नहीं, करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऑटोकैड सीखने के बाद वो कहाँ कहाँ कर हाँ, सकता है जॉब। ऑटोकैड के अगर आपके पास मतलब आपका मैकेनिकल है या फिर सिविल है, कोई भी है, कोई भी बंदा अगर से ऑटोकैड सीखता है, सिविल। हाँ, तो वो क्या करता है डिजाइनिंग वर्क में या ड्राफ्टिंग वर्क में जिसमें उसका वेल एक्सपीरियंस है, उसमें वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या करता है, अप्लाई कर सकता है। ठीक है। अच्छा, बाकी फिर जैसे जी ऑटोकैड सीखने के बाद आर्किटेक्ट के अंडर कर सकता है वो काम की क्या। हाँ, वो डिपेंड करता है कि आप सीनियर पोजीशन में किसके अंडर में काम कर रहे हैं, आपके अंडर में भी कोई काम कर सकता है, ऐसा भी बात है। फिर जैसे मैं ये पालनपुर हिमाचल से हूँ ना, तो फिर जैसे मतलब ऑटोकैड सीखने के बाद फिर मैं फिर किसके पास जाऊँ, जैसे कि ऑटोकैड सीखने के बाद ये कमाई हो स्टार्ट हो जाए। देखिए ये तो आप अभी क्या है, अगर ऑटोकैड आपको आता है, ठीक है, अच्छे से, तो उसके बाद आप अपने लोकल जो कंपनीज हैं, आपके एरिया कंपनी है, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो नॉर्मल जो कंपनीज हैं, जैसे आपके एल हो गया, उसके बाद अदर जो कंपनीज है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो या फिर क्वालिटी कंट्रोल कंपनी है, उसको आप सर्च कीजिए कि आपके एरिया में कौन से वेल कंपनी है, उसमें आप जाके अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि आपको ये नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग बेस वो आपको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। ये फिर ऐसा नहीं है कि ऑटोकैड सीखने के बाद आप क्या होगा कि आप जॉबलेस रहेंगे, ऐसा नहीं है, आप ट्राई कीजिएगा,
अपने इस एरिया में फील्ड में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सर्च करते हैं, ठीक है। बस फिर ये ऑटोकैड सीखने के बाद फिर ये बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बताओ इस बिजनेस बारे इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिजनेस, जैसे मैं अपना, मेरा इतना ऑर्गेनाइजेशन है मानचित्र, ओके। इसमें मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल नॉर्मल क्या करता हूँ, ऑल ओवर इंडिया से मैं क्या प्रोजेक्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर नॉर्मल 2D प्लान, थ्री डी वर्क, उसके बाद बहुत बहुत सारे वर्क जो होते हैं जो डिजाइनिंग वर्क में आते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर वगैरह ये सब किया जाता है, ठीक है। तो वो सब अलग बात है। उसके फिलहाल स्टार्टिंग उतने दूर तक अपनी सही है, सोच रहे हैं, लेकिन क्या है, आप पहले बेसिक तो सीखें, उसके बाद तो फिर स्टेप बाय स्टेप हर कुछ सीखा जाएगा और उसके बाद ही यूज किया जाएगा, ठीक है। हाँ, बस फिर जैसा हम बोल रहे हैं कि ऑल इंडिया से मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, तो मतलब फिर प्रोजेक्ट से कैसे ले जाते हैं फिर वो ऑल इंडिया से, मतलब किस तरह से वो ऑल अब आप कनेक्शन, आपको कनेक्शन उसका बनाना पड़ता है, कंपनी के साथ आपको टाई अप रहना पड़ता है, ठीक है। अच्छा। ओके, ओके, तो आई थिंक द क्वेश्चन सेशन हैज कम टू एन एंड। आई रिक्वेस्ट पोर्ट Yes, ट्रेनिंग। thank you very much, sir, for joining with us. And all learners, thank you for joining the session today. I hope you learned a lot of things from our expert. We hope you with the registration, and we have dropped the registration link. So whoever wants to register for this course, kindly go through the link. Thank you very much for joining. ओके सर, थैंक यू सर। Good night and happy Holi to everyone. Okay, happy Holi to everyone, to all my dear students. Okay, and I hope that you must join this session, 21 day sessions. Okay, thank you, good night. Huh?